हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द क्रॉप, कटिंग ऑफ द क्रॉप बाय विद किसे की जाती है हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज मेनली डन with the help of tractors or machines. The machines which are used for cutting of crops are known as harvesters. Okay, the word harvester means the machines which are used for cutting of the crop. In this, after harvesting, cutting of the crop, after when the grains, when the crop completely, when the crop get mature, then the next step is the cutting of the crop. In this cutting of the crop, we use mainly harvesters are used. Harvesters machines are used to cut down the crops. Next thing is the threshing. What is threshing? Threshing is the separating of grains from the stalks. After cutting down the crops, there will be so many stalks and the pieces from where the grains should be separated. This separation of grains is mainly done by the next process, which is known as threshing. After the threshing, third step is winnowing. Winnowing means the removing of calf from the grains. When we remove stalks from the grain, then some grains contain some cover over them. These covers are known as calf, and we have to remove these calves for the good quality of the grains. Then this removing of calf were done from the grains with the process of winnowing. अब इन दिस व्हाट इज द हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग हमने पढ़ लिया कि कटिंग की जाती है क्रॉप्स की, ठीक है। अब क्या होता है कटिंग करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने क्रॉप्स को कट कर लिया, उसमें क्या होता है कि क्रॉप्स के साथ हमारे उनकी कुछ स्टिक्स जड़ी रह जाती हैं, कुछ पीसेस उनके साथ ही रह जाते हैं, पूरी तरीके से रिमूव नहीं होते। तो इसके लिए क्या की जाती है? थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग जिन मशीन से की जाती है उनको कॉम्बाइन मशीन बोलते हैं। कॉम्बाइन मशीन आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। इससे क्या किया जाता है कि जो ग्रेन्स के जो स्टॉक्स हैं, जो लकड़ी के टुकड़े उनमें अभी भी रह गए हैं, उनको रिमूव किया जाता है। कुछ स्टोन्स जो रह गए हैं उनको रिमूव किया जाता है। आफ्टर विनोइंग, थ्रेसिंग के बाद विनोइंग में क्या किया जाता है कि आपने देखा होगा चावल के दाने या गेहूं के दाने हम देखते हैं तो उनके ऊपर उनकी कवरिंग होती है, कुछ पीसेस होते हैं उनके ऊपर, जो हमारा जो मेन जो लीव्स होती है उनका पीसेस होता है। तो वो जो काल्फ जो है यानी कि वो जो कवरिंग है उसको रिमूव किया जाता है ताकि जो वीट है वो प्योरली हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो विनोइंग होती है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरिंग। जब हमने पूरी तरीके से क्रॉप, हमने सीड डाल दी, मैन्योर डाल दिया, सब हो गया, हमारी क्रॉप ग्रो हो गया, अब हमने क्रॉप को कट भी कर लिया है। अब क्रॉप कट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसको स्टोर करने का, कि जितनी भी हमें फील्ड है हमारे पास, हम उसको पहले जो भी जितनी भी हमारे पास क्रॉप की ईल्ड आई है हम उसको स्टोर करेंगे। तो ये जो स्टोरेज होती है वो डन की जाती है फार्मर्स के थ्रू। फार्मर्स क्या करते हैं कि जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड में उनकी भी जितनी भी ग्रेन्स आई है उनको वो कलेक्ट करते हैं, पूरी तरीके से उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद उनको वो स्टोर करते हैं एंड आफ्टर दिस स्टोरिंग दे सेल देम टू द मार्केट। उसके बाद स्टोर करने के बाद व्हेन दे गेट देयर प्रॉपर अमाउंट, व्हेन दे गेट देयर रिक्वायर्ड नीडेड अमाउंट, दे सेल दिस क्रॉप टू द मार्केट और टू द गवर्नमेंट। In this system, the mainly process, the storage process is also done by the government. Government also store grains. They collect, they buy these grains, they buy the crop from the farmers, and then they store them this crops to for the further requirement. When if there is any emergency develop in any country, then they use their storage products. Farmers में क्या होता है? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक्स जो होता है, बफर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमने आज, कितने भी फार्मर ने अपने क्रॉप को सेल किया है, गवर्नमेंट ने उस क्रॉप को खरीदा है, तो जितनी भी क्रॉप उन्होंने खरीदी है वो उसको हैंड टू हैंड तो स्प्रेड नहीं कर सकते ऑल ओवर द कंट्री। सो दे क्या करते हैं? वो इसको स्टोर करते हैं। स्टोर किए जाते हैं किस लिए? फॉर द एट द कंडीशन ऑफ एमरजेंसी, टू यूज दिस क्रॉप्स, दिस स्टोरेज एट द कंडीशन ऑफ एमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डे वी आर गोइंग थ्रू एंड सम एमरजेंसी. In this period of time when there is nothing to have, then this stocks which government have already made, they store some grains, they store some food, they store some this crop, they store that all the food material so that they can use them at the time of the emergency. That's why the storage has been done. आफ्टर दिस हमारा एनिमल से हमें फूड मिलता है। तो एनिमल से जो हमें फूड मिलता है वो कई टाइप का होता है। जैसे फूड फ्रॉम द एनिमल, विच टाइप ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम द लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड हनी, दिस व्हाट आर दिस ऑल फूड वी आर मेनली गेट फ्रॉम द animals. First is milk animals who are milk animals like cow, buffalo are the milk animal. Fishes we use, we directly use, we can boil, we can eat fishes, we use so many things made up of fishes. Next is poultry पोल्ट्री फार्म्स जो होती है, पोल्ट्री फार्म्स में इनमें क्या किया जाता है? बर्ड्स वगैरह को, हैंस वगैरह को रखा जाता है ताकि उनके जो एग्स हैं उनको यूज़ किया जाकर उनको सेलिंग की जाती है ताकि इससे फार्मर्स जो होते हैं बेनिफिट लेते हैं। हनी बीज होती है, हनी बीज से हमें हनी मिलता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जिनको हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो फॉर दिस अब हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इज completed. Now we are going to do our question answer. You have to go through to the chapter once read all the once read the chapter fully from starting to till, and if you have any doubt, any query, you can ask. Thank you.